Yes, Niranjan. Thank you. Thank you so much. So we'll start the program. Tanuja ma'am, can we please have all our videos on, if it's okay? Tanuja ma'am? Yes, you can text Bharat also to join because he. Okay, sir. What is there? No, Bharat is not there. Some few people, I'm still waiting for them to start the camera. Ma'am Tanuja, Mr. Shiva, Mr. Ramanna Krishnan, Mr. Sai Prasad. Niranjan, could you please check with them whether they're going to on so that we'll start off? The video will take 20 minutes minimum. Welcome, Bharat. Mr. Derek, welcome. You're welcome. Nice to see you too. It's a pleasure. Welcome you on this platform one more time. Sure, thank you. The pleasure is always ours. Thank you for the opportunity. Thank you, Mr. Derek. Yeah, Mr. Derek, just for your information, the backdrop is there in the chat box if you'd like to use it. Thank you. So Ramesh, Dr. Ramesh, should we wait for Tanuja ma'am to join? No, I think she's having some other issue, ma'am. We can start, Okay. ma'am. Then. Okay, fine. Okay. So good evening and welcome to yet another one more virtual meeting on G20 International Youth Cabinet. As we all know that we have been speaking about the SDG goals, the 17 SDG goals and the ways to attain them for nearly about 10 weeks. And it's time to felicitate people who have been pillars of support, who have taken it forward through and through, and then like who have just brought to this grand felicitation ceremony. And it's time to honor and acknowledge and felicitate people, the speakers who have time and again supported us with their insight, with their references, with the hours and toil of artwork and the reference work which has been shared on. And on this platform, there has been always insights and inferences. It's more kind of a knowledge sharing and also sharing about the particular projects which we are going to take it forward in collaboration and moving ahead. Like as always, our service to the community becomes our priority as such. So as I always say, coming together is a beginning, staying together is a process, and working towards is a success. As we all know, and we have mentioned earlier also, G20 International is a continuous program which will go on different phases. We have started with phase one, which is just an introductory phase where we are briefed about our rationale, our vision, and mission. When we talk about our vision, we all know that it relates to the 5 P's of the SDGs. That is planet, people, prosperity, peace, and partnership. And moving ahead, like when we talk about the mission of our G20 International, we talk about the 9 P's, including about policies, principles, and how to execute things in terms of collaboration and working with people and taking it forward with all our projects. And moving ahead, like when it comes to the phase 2 point of it, as
it is a prime motto for us that we want to take it forward to the youth. As the name goes, it's a youth cabinet. G20 Youth Cabinet. When we say that, we say it with pride because it's a youth cabinet which is going to be of the youth, by the youth, for the youth. So we want to create young leaders who are going to take it forward. So without taking much time, so as this is a felicitation ceremony, I would like to play the video with everyone's support. Thank you so much. Allow me to share my screen, please. Thank you. Okay. I'm just trying to share my screen. 1 second. Yes, I am actually. So do you mind sharing? Do you mind playing it? Yes, yeah, you can start playing. Thank you. I'll make you the co-host or host. You should be able to share. Yeah, Niranjan? Yes. You can remove my video. It's not required actually. So our prestigious journey of G20 Youth Cabinet started from here, the dream that never allowed us to sleep. As we are always mentioned in every program, it's of the youth, by the youth, and for the youth, during which we talked about the 5 Ps and the 9 Ps of 17 SDGs. This is going to be a little briefing about G20. Exactly. We have purposely taken it with the regional language of India, and then there'll be the briefing, and it is more related. How is it related to the G20 Youth Cabinet?
So let's know more about the Global 20, that's G20. आप नाम से ही यहाँ पर पता लगा सकते हैं कि इट इज एक्चुअली ग्रुप ऑफ 20। तो ये 20 क्या है? दे 20 आर डिफरेंट नेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये दरअसल एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है। हम कई इस तरीके से फोरम्स और प्लेटफॉर्म्स के बारे में बात करते हैं। तो वन सच प्लेटफॉर्म और फोरम इज एक्चुअली G20, जहाँ पर 19 अलग अलग कंट्रीज और एक यूरोपियन यूनियन जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, डिस्कशंस और डिबेट वहां पर करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मेजर इश्यूज हमें G20 में इस इंटर गवर्नमेंटल फोरम में जो देखने को मिलते हैं वो ग्लोबल इकोनॉमी से रिलेटेड होते हैं ज्यादातर, जो कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से डील करते हैं, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के क्लाइमेट चेंज और उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट से चीजें हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट जो कि हाल ही में बहुत ही प्रोमिनेंस ले चुका है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट पर यहाँ पर डिस्कशन किए जाते हैं और चंद इंपॉर्टेंट से डिसीजंस भी लिए जाते हैं। आगे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि दरअसल ये ग्रुपिंग की जरूरत क्या पड़ गई थी। हम कई रीजनल ग्रुपिंग्स की भी बातें करते हैं, हम कई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की भी बात करते हैं। तो G20 की जरूरत हमें कब महसूस हुई? तो जैसे कि आप सभी को पता है कि वर्ल्ड वॉर 1 और 2 ने हमारे वर्ल्ड इकोनॉमी को, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को बहुत बुरी तरीके से मार दी हुई थी, और यूरोपियन कंट्रीज जो कि आज हेवीली इंडस्ट्रियलाइज्ड देखे जाते हैं, एट द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 बहुत ही मीगर हो चुके थे, बहुत ही मजबूत थे, बहुत ही वीक थे। तो ऐसी जरूरत हमें महसूस हो रही थी कि हमें एक वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन बनाने की जरूरत थी, हमें चंद ऐसे इनिशिएटिव्स लेने की जरूरत थी जो कि इंटरनेशनल लेवल पर हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को सही तौर पर मेंटेन कर सके, कोऑर्डिनेशन हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड सही हो सके। और उससे रिलेटेड सबसे मेजर डिसीजन हम ऑलरेडी देखते हैं, व्हिच इज ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस जो चला हुआ था 1944 में, जिसके रिजल्ट के सबब हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस का एस्टैब्लिशमेंट देखते हैं। तो एट द सेम टाइम महज वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का एस्टैब्लिशमेंट होना काफी नहीं था, इस तरीके के और भी कई वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस और इनिशिएटिव्स हमारे लिए बहुत ही जरूरी थे। तो उसी सच नीड में से बाहर आया हुआ एक कॉन्सेप्ट था द ग्रुपिंग ऑफ 20, इट इज G20। तो G7 जो थे वो नेशंस ऑलरेडी जो वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड जो नेशंस थे 1970s में उन्होंने उनकी बैठक हुई थी, और G7 वहां से हमें एस्टैब्लिश होता हुआ देखने को मिलते हैं। मैं आपको आगे भी इसके बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा। तो G7 के इनिशिएटिव से जो है सबसे पहली बार हमें G20 का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, खासकर ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जब हो रहे थे 1990s में, और एशियन इकोनॉमीज जो थे वहां पर थोड़ा बहुत अच्छा खासा डेवलपमेंट दिखा रहे थे। तो यहाँ पर G7 नेशंस को पता चल गया कि अगर हमें वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर को सही तौर पर मेंटेन करना है, हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स को अगर हमें सही तौर पर मेंटेन करना है, तो हमें जस्ट डेवलप्ड नेशंस नहीं, हमें डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड नेशंस को भी साथ लेकर चलना है। क्योंकि उस टाइम फ्रेम में एशियन कंट्रीज जो खासकर इंडिया, ब्राजील, इस तरीके के जो इवन साउथ अमेरिकन नेशंस भी जो थे वो बहुत ही प्रोमिनेंस दिखा रहे थे, वो डेवलपमेंट में बहुत ही आगे जा रहे थे। तो इस तरीके के नए नए मार्केट्स को भी साथ लेकर चलना बहुत ही जरूरी था। उन्हें इंपॉर्टेंस पता चल गया कि इस तरीके के जो नेशन है वो बहुत ही क्रूशियल हो सकते हैं। सो दिस एक्चुअली पेव्ड वे फॉर द फॉर्मल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ G20 ग्रुपिंग। तो वहां पर कैनेडियन फाइनेंस मिनिस्टर पॉल मार्टिन साहब जो थे वो सबसे पहली बार चेयरमैन की तरह चूज किए गए थे फॉर दैट इनॉग्रल सेशन। लेकिन यहाँ पर एक खास बात ये थी कि 1999 में G20 का आइडिया जब पूरी तरीके से आता है, उसका एस्टैब्लिशमेंट भी होता है, लेकिन वो बहुत ही इरेगुलर था, यानी कि उसे पूरी तरीके से एक स्ट्रक्चरल और इंस्टीट्यूशनल फॉर्म उसे नहीं दिया गया था। तो सबसे दूसरा मेजर जो डिसीजन आता है एज फार एज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ G20 इज कंसर्न, वो 2008 में आया था। आप सभी को पता है 2008 में पूरी दुनिया ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी, और खासकर यूएस जैसी कंट्री भी बहुत ही मजबूर थी इस फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरने के लिए। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वर्ल्ड लीडर्स को फिर से पता चल गया कि नहीं, और खासकर G20 लीडर्स को कि वी आर द नेक्स्ट बिग थिंग इन दिस इकोनॉमी, इन दिस मार्केट। तो जाहिर सी बात है हमें साथ लेकर चलना पड़ेगा, हमें कंसेंसस बिल्ड करके ही, और हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल पर जब तक हम डिसीजंस नहीं लेंगे, हम एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्डर को सस्टेन और सर्वाइव नहीं कर सकते। तो यही वो मेजर डिसीजन था 2008 में, जहां पर G20 लीडर्स ने एक यूनाइट डिसीजन लिया हुआ था, ठान लिया हुआ था कि वो हर साल एनुअली मीट करेंगे इन समिट्स में। तो इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर दिस समिट्स द G20 फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स कंटिन्यू टू मीट ऑन देयर ओन ट्वाइस अ ईयर। तो हर साल जो हाईएस्ट पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं कंट्रीज के, यानी कि अगर किसी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर है और किसी कंट्री में प्रेसिडेंट्स, तो वहां पर ईयरली एक समिट होता है, और मैं वो समिट्स किस तरीके से होते हैं उसके बारे में भी बताऊंगा। तो सेपरेटली अपार्ट फ्रॉम दोज इंपॉर्टेंट समिट्स, हर साल जो 2 बार फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स उन रेस्पेक्टिव कंट्रीज के वो मिलते हैं, एजेंडास वगैरह वो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे होलिस्टिकली आपको थोड़ा बहुत अच्छा खासा समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से G20 का इजाद हुआ। तो आप देख सकते हैं G7 जो कि उस टाइम फ्रेम में 1973-75 के आसपास ऑलरेडी वो डेवलप्ड थे, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पर ये फर्दर लेकर आगे जा रहे थे इंटरनेशनली एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाने का, एक ऐसा ऑर्डर बनाने का जो सर्वाइव और सस्टेन कर सके। और 1997 में रशिया को भी इसमें इंक्लूड किया गया था और इसे G8 का ग्रुपिंग दिया हुआ था, और फाइनली 1999 में हमें G20 का ग्रुपिंग देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पर
देख सकते हैं इन सभी कंट्रीज को कलेक्टिवली G20 का मेंबर कहा जाता है। तो अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज G7 और G8 नेशंस, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मेक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया एंड टर्की आर एक्चुअली द G20 मेंबर्स। तो यूरोपियन यूनियन का भी रिप्रेजेंटेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, इसीलिए 19 कंट्रीज प्लस 1 यूरोपियन यूनियन, इन सभी को G20 का ग्रुपिंग कहा जाता है। तो देयर आर फ्यू परमानेंट गेस्ट इनवाइटीज भी जिन्हें रेगुलरली इसके समिट्स में बुलाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी रिप्रेजेंटेशन बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अफ्रीकन यूनियन, एशिया, वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल वन अगेन साउथ ईस्ट एशिया में, तो उन्हें भी यहाँ पर एज अ परमानेंट गेस्ट इनवाइटी बुलाया जाता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ILO, IMF, और खासकर स्पेन की खास बात है, स्पेन इकलौता ऐसा कंट्री है जो परमानेंट गेस्ट इनवाइटी की तरह G20 के समिट्स को हाजिर होता है, वहां पर रिप्रेजेंटेशन देता है। तो बाकी के भी आप देख सकते हैं न्यू पार्टनरशिप फॉर अफ्रीकन डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, WHO और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को भी यहाँ पर परमानेंट गेस्ट इनवाइटीज की तरह बुलाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना क्रूशियल G20 इनफॉर्मल या फिर G20 ये इंटर गवर्नमेंटल फोरम है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? अच्छी बात है सर, तो हमें इस तरीके के क्या बाकी के भी कंट्रीज या फिर इस तरीके के ग्रुपिंग्स नहीं है क्या? एशियान भी है, सार्क के भी बारे में हमने बात किया, ऐसे कई हैं। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? G20 किस लिए एक प्रोमिनेंट प्लेस रखता है? तो G20 बहुत ही स्ट्रेटेजिक रोल प्ले करता है, खासकर हमारे ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी को इंश्योर करने में, सिक्योर हमारी फ्यूचर बनाने में, खासकर एज फार एज आवर इकोनॉमिक स्ट्रेंथ इज कंसर्न। क्योंकि यहाँ पर आप आंकड़े अगर देखें तो G20 मेंबर्स जो जितने भी 19 कंट्रीज प्लस 1 यूरोपियन यूनियन है, वो सभी मिलाकर 60% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, 80% ऑफ द ग्लोबल GDP को वो रिप्रेजेंट करते हैं और 75% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट्स को वो इकलौते रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस लिए G20 ग्रुपिंग इतना सिग्निफिकेंट है, और पूरी दुनिया जो है वो रुकती है देखने के लिए कि G20 का मीटिंग क्या चल रहा है और वहां पर आउटकम क्या था, एजेंडा क्या था, डिस्कशंस क्या थे। क्योंकि वर्चुअली 2/3 ऑफ द वर्ल्ड का कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं इंपॉर्टेंट जो पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन हो, ग्लोबल GDP का हो या फिर ग्लोबल एक्सपोर्ट्स का हो, वो हमें इन G20 नेशन से ही देखने को मिलता है। और G20 काम किस तरीके से करता है? देखिए, प्रेसिडेंसी जो है वो हर साल रोटेट होती है अमंग ऑल द मेंबर्स। तो 19 जो कंट्रीज हैं और यूरोपियन यूनियन जो है, उनके बीच ये प्रेसिडेंसी जो है वो इवॉल्व होती ही रहती है। और खासकर यहाँ पर आपको एक टर्म जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ट्रॉइका। Troika, with the country that holds the presidency working together with its predecessor and successor are also known as a troika to ensure the continuity of the agenda। तो हर 3 साल के लिए जो है ऑलरेडी मेंबर्स को चूज किया जाता है, अलग अलग ग्रुपिंग्स होते हैं, मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। तो इस ट्रॉइका को जो है वो मिलाकर 3 साल के प्रेसिडेंसीज दिए जाते हैं। अब मान लेते हैं कि करंटली इटली, जिसने पिछले साल ही G20 समिट को होस्ट किया हुआ था 2021, अभी करंटली 2022 इंडोनेशिया बाली में हो रहा है और 2023 इंडिया न्यू दिल्ली में जो है ये होस्ट होगा। तो इन 3 कंट्रीज को मिलाकर ट्रॉइका कहा जाता है। तो एजेंडा जो G20 इटली में सेट करता है वो इंडोनेशिया और इंडिया में भी कंटिन्यू होता है। तो बाद इनके अगेन 3 ट्रॉइकास को चूज किया जाता है जो कि फर्दर आगे नेक्स्ट 3 साल के लिए प्रेसिडेंसी होल्ड करेंगे और इंपॉर्टेंट से एजेंडास डिस्कस करेंगे। और G20 का कोई भी परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है। हम सार्क की बात करते हैं, एशियान की बात करते हैं, इन सभी के हेडक्वार्टर्स कहीं ना कहीं होते हैं, सेक्रेटेरिएट्स होती है। यहाँ पर परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं होता, इसीलिए इसे बहुत ही यूनिक और डायनामिक माना जाता है कि जिस कंट्री में जो डिस्कशन होता है, पर जिस कंट्री में होस्ट किया हुआ होता है, वहां पर नया सा सेक्रेटेरिएट बनाया जाता है, क्योंकि जहां पर वो एजेंडा जो डिस्कशंस किए गए हैं वो उसी कंट्री से ही इनिशिएट किए जाते हैं और वहीं से दे मेक श्योर दैट दे ऑल आर फुलफिल्ड। Agenda and the work coordination is completely by the G20 leaders, personal representatives known as a शेरपास। तो हर कंट्री अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजती है चूज करके। तो इंडिया ने अपने शेरपा को जो है पीयूष गोयल साहब को चुनकर भेजा हुआ था, एंड टुगेदर विद फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स। तो ये तीनों पोजीशंस बहुत ही क्रूशियल है। रिमेंबर, एक तो शेरपा जो कि रिप्रेजेंट करते हैं उस कंट्री को, ठीक है, वहां पर पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव्स उस G20 लीडर्स के मान लेते हैं कि इंडिया में तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है, तो उन्होंने अपना रिप्रेजेंट देने के लिए कहीं ना कहीं पीयूष गोयल साहब को भेजा हुआ है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी और सेंट्रल बैंक गवर्नर, हमारे यहाँ तो RBI है, सेंट्रल बैंक, तो शक्तिकांता दास साहब। तो ये तीनों बहुत ही क्रूशियल होते हैं इस G20 के वर्क के लिए। तो इसी तरीके से 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन भी अपने इस तरीके के रिप्रेजेंटेशंस भेजता है। और प्रेसिडेंसी का सिलेक्शन कैसा होता है? अभी हमने देखा, अच्छी बात है, ट्रॉइका है, हर 3 साल एजेंडा चेंज होते हैं, कंटिन्यूटी के लिए भी अच्छी बात है, लेकिन सिलेक्ट किस तरीके से होते हैं? तो 19 कंट्रीज जो पूरे हैं ना, उन सभी को 5 अलग अलग ग्रुपिंग्स में डिवाइड किया गया है। ऑफ कोर्स यूरोपियन यूनियन जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेपरेट कंट्रीज है, तो उसे किसी ग्रुपिंग में नहीं रखा गया है। तो ईच हैविंग नो मोर देन 4 कंट्रीज, द प्रेसिडेंसी रोटेट्स बिटवीन ईच ग्रुप। एवरी ईयर द G20 सेलेक्ट्स अ कंट्री फ्रॉम अनदर ग्रुप टू बी प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 अलग अलग ग्रुपिंग्स अलग अलग रीजन्स को रिप्रेजेंट करते हुए आपको देखे जाएंगे। तो हर ग्रुप में से, अलग अलग ग्रुप में से एक कि वो कुमुलेटिवली 1 साल के बाद प्रेसिडेंसी चूज की जाए। तो आपको देख सकते हैं इंडिया जो है वो ग्रुप 2 का हिस्सा है। तो इस तरीके से 5 अलग अलग ग्रुपिंग्स में से, कंट्रीज में से चुने जाते हैं, यानी कि वही खुद चुनते हैं, ऐसा नहीं कि कोई सेपरेट प्रोसेस है, वही कंट्रीज ही चुनते हैं अपने बीच में से कि कौन जो है वो नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन देगा।
तो अब तक जो है जो जितने भी इंपॉर्टेंट से G20 समिट्स हैं उन सभी के बारे में हम थोड़ा बहुत देखते हैं। तो सबसे पहला जैसे कि आप सभी को पता है वाशिंगटन डीसी में हुआ था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फॉलोड बाय यूके लंदन, एंड देन थर्ड समिट जो था वो अगेन यूनाइटेड स्टेट्स पिट्सबर्ग में हुआ था, फोर्थ कनाडा टोरंटो में हुआ था, फिफ्थ समिट जो था वो साउथ कोरिया सियोल में हुआ था, सिक्स्थ फ्रांस कैनिस, सेवेंथ मेक्सिको में था, और एट्थ रशिया सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था, नाइन्थ ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन, टेंथ टर्की में हुआ था, और 11th जो था वो चाइना ग्वांगझो में हुआ था, 12th G20 समिट जर्मनी में था, और 13th G20 समिट अर्जेंटीना में था, 14th जापान ओसाका में था, 15th सऊदी अरेबिया रियाद में था, और 16th इटली रोम में हुआ था हाल ही में ही। तो हर G20 समिट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंपॉर्टेंट से डिक्लेरेशंस और डिसीजंस लिए ही गए थे, तो बहुत ही क्रूशियल हैं ये सभी समिट्स। तो अभी एज ऑफ नाउ 2022 के लिए जो कि 17th समिट चलने वाला है वो इंडोनेशिया होस्ट कर रहा है करेंटली, विच इज इन बाली। तो 2023 के लिए जो कि इंडिया जो है जिसने होस्टशिप एक्ट की हुई है, तो वो मोस्ट प्रॉब्ली न्यू दिल्ली में हो सकता है। तो इससे रिलेटेड अभी जैसे कि मैंने वीडियो के पहले में आपको कहा कि हाल ही में ही कैबिनेट के इंपॉर्टेंट से डिसीजंस लिए गए थे कि सेक्रेटेरिएट कहां पर होगा, कौन कौन क्या क्या रिस्पांसिबिलिटीज लेगा, वो सभी एलोकेट और असाइन किए गए हैं 2023 के लिए। और 2024 के लिए भी एक्सपेक्टेड है ब्राजील अभी कुछ फुल फ्लेश करा नहीं गया, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि ट्राइका यहाँ पर तीन कंट्रीज जो मिलकर काम करते हैं, तो 19th समिट जो है वो एक्सपेक्टेड 2024 ब्राजील कर सकता है, और 2025 के लिए साउथ अफ्रीका कर सकता है। एंड अपार्ट फ्रॉम द लीडर लेवल, हाईएस्ट लेवल जो के समिट्स ऑलरेडी चलते हैं, जहां पर कंट्रीज के प्रेसिडेंट्स या प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग्स भी यहाँ पर होते हैं। तो 1999 में सबसे पहली बार फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की मीटिंग स्टार्ट हुई थी। ऑफ कोर्स सबसे पहला स्पार्क यहीं से आता है, क्योंकि हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल मीटिंग जो शुरू हुए थे वो 2008 से हुए थे रेगुलरली। तो 1999 से ही फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स के मीटिंग स्टार्ट हुए थे, मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग्स। 2010 में से और थोड़ा एक्सपेंड करके लेबर और एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स के भी मीटिंग्स रखे गए थे G20 कंट्रीज के। 2017 में फॉरेन मिनिस्टर्स लेवल मीटिंग में रखे गए थे, और 2012 से ट्रेड मिनिस्टर्स या फिर कॉमर्स मिनिस्टर जो होते हैं उनसे रिलेटेड भी G20 मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग्स रखे गए थे, और सिंस देन कंटिन्यूअसली वो चलते ही रहे हैं, और स्टिल इंपॉर्टेंट से डिस्कशंस वहां पर भी होते रहे हैं। And apart from all these ministerial level meetings and apart from all these highest political level meetings, G20 engagement groups भी मेंटेन करता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बिजनेस ग्रुप्स को, बिजनेस इंटरेस्ट ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करने के लिए भी जो है वो B20 ग्रुप बनाया गया था। ठीक है, 2008 में से एस्टैब्लिश किया गया था, और 2010 में से रिकॉग्नाइजेशन मिला हुआ था। तो लेबर से रिलेटेड भी ट्रेड यूनियंस और अदर एम्प्लॉइज से रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी कि यहाँ पर इन 20 कंट्रीज या फिर इन 19 कंट्रीज और यूरोपियन यूनियन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं बिजनेस के, वो वहाँ पर एंगेजमेंट ग्रुप्स की तरह वहाँ पर आते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी सेशंस और समिट चलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं L20 जो था वो 2008 में फाउंड किया गया था, और उसे रिकॉग्नाइजेशन 2011 में मिला था। C20 दैट इज सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, जो एनजीओस होते हैं 20 कंट्रीज में, उनके लिए भी एक फोरम बनाया गया था, फिर एक एंगेजमेंट ग्रुप, जो कि 2013 में इसे रिकॉग्नाइजेशन मिला हुआ था। यूथ के रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए भी वही 20 एंगेजमेंट ग्रुप बनाया गया था। थिंक टैंक्स, जो ग्लोबल थिंक टैंक्स होते हैं खासकर हमारी G20 कंट्रीज के, उनके लिए भी एक एंगेजमेंट ग्रुप बनाया गया था। वुमेन, खासकर वुमेन के रिप्रेजेंटेशन के लिए, वुमेन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी जो है 2015 में W20 एंगेजमेंट ग्रुप एस्टैब्लिश किया गया था। S20 फॉर साइंस एंड रिसर्च रिप्रेजेंटेटिव्स, एंड फाइनली U20 फॉर अर्बन रिप्रेजेंटेशंस, जो कि मेयर्स और गवर्नर्स होते हैं मेजर अर्बन सिटीज के। G20 में जितने भी मेजर बड़े बड़े अर्बन सिटीज हैं उन सभी के गवर्नर्स और मेयर्स के रिप्रेजेंटेशन के लिए वहां पर एंगेजमेंट के लिए G20 एंगेजमेंट ग्रुप्स बनाए गए। तो आप देख सकते हैं कि किस लिए G20 इतना सिग्निफिकेंट माना जाता है। और फिर हम एक बार देखते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, किस किस तरीके से ये काम करने की कोशिश करता है, क्यों ये सबसे हटकर है। स्ट्रेंथनिंग फाइनेंशियल रेगुलेशंस, ऑफ कोर्स 75% ग्लोबल एक्सपोर्ट्स हम देख सकते हैं, अच्छा खासा जीडीपी का रिप्रेजेंटेशन दुनिया का यहाँ पर देखने को मिलता है। तो फाइनेंशियल रेगुलेशंस को ज्यादा से ज्यादा हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं इनकी मदद से। कोऑर्डिनेटेड फिजिकल एंड मॉनिटरी स्टिमुलस, मैंने आपको कई बार कहा कि फिजिकल जब वर्ड है इट इज रिलेटेड विद फाइनेंस मिनिस्ट्री, और मॉनिटरी जब वर्ड है तो इट इज रिलेटेड विद सेंट्रल बैंक और आरबीआई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंट्री में भी, इंडिविजुअल कंट्री में भी जो टैंडम होता है, जो फिजिकल फाइनेंस मिनिस्ट्री और जो उसकी सेंट्रल बैंक के बीच, वो भी कोऑर्डिनेट हो, सही तौर पर उसका स्टिमुलस भी आगे बढ़ता रहे। क्योंकि यहाँ पर जो मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं वो इंडिविजुअल लेवल पर कंट्रीज में ही तो उन्हें फुलफिल किया जाता है। और सबसे अच्छी बात G20 की यह है कि फ्लेक्सिबल है और इंक्लूसिव है। नो डाउट हर साल प्रेसिडेंसी अलग अलग कंट्रीज के पास जाती है, हर 3 साल में एक बार एजेंडा चेंज किए जाते हैं। तो बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी और सभी का इंक्लूसिवनेस भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, क्योंकि जो कंट्री होस्ट करता है वहीं पर सेक्रेटेरिएट बनाया जाता है, और वहीं पर से जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस वहां पर लिए गए हैं वहीं से उसका काम शुरू होता है। लेंडिंग में भी बहुत ही जबरदस्त इंक्रीज हुआ है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट जो G20 के कंट्रीज ने रखा हुआ था वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रीस्ट्रक्चर ही करना था। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिफॉर्म्स भी लाए गए थे IMF, वर्ल्ड बैंक जैसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस में भी। डेवलपिंग कंट्रीज को भी बहुत ही जबरदस्त सा स्कोप मिला हुआ था यहाँ पर लेंडिंग्स वगैरह के लिए भी, ताकि वो भी आगे बढ़ सके। ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट्स कई साइन किए गए, क्योंकि G20 कंट्रीज जब समिट्स में मिलते हैं तो वहां पर हम देख सकते हैं इंडिविजुअल कंट्रीज भी एक दूसरे के साथ ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट्स भी साइन कर सकते हैं। तो ओवरऑल ट्रेड और इकोनॉमिक इफेक्ट्स भी बहुत जबरदस्त होता है। एंड द वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज इट इज टू बिग टू फेल। अभी हमने जितने भी आंकड़े ऊपर देखे हुए थे, 60% ऑफ द पॉपुलेशन रिप्रेजेंट करता है, इंपोर्ट्स और
एक्सपोर्ट्स इसके किस तरीके से है, तो ये बहुत ही बड़ा है फेल होने के लिए, यानी कि दैट वेरी ह्यूजनेस इटसेल्फ इज मोर देन इनफ कि ये रेसिलिएंट एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है या फिर एक रेसिलिएंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है कहने के लिए। और जो इंपॉर्टेंट से इश्यूज जो अब तक G20 ने एड्रेस किए हुए थे, फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट से डिसीजंस लिए गए थे, टैक्स और फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए थे, ट्रेड, एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट, एनर्जी, करप्शन, वुमेन एम्पावरमेंट, एजेंडा 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स जिन्हें हम कहते हैं, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल हेल्थ और एंटी टेररिज्म पर भी मेजर इश्यूज जो थे उन सभी के बारे में G20 के अलग अलग समिट्स में हमने डिस्कशन देखे हुए थे। और सिंस कोविड तो ग्लोबल हेल्थ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रोल प्ले कर रहा है। और इंडिया जो कि 2023 का होस्ट होने वाला है, तो कौन से प्रायोरिटी के एरियाज हम देख सकते हैं जो कि इंडिया ने ऑलरेडी डिसाइड किए हुए हैं, या फिर इंडिया इन पर फोकस जरूर कर सकता है। टैक्स एवेशन से रिलेटेड इश्यूज हम हाईलाइट यहाँ पर कर सकते हैं। एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज में टैक्स एवेशन बहुत ही हमें ज्यादा देखने को मिलता है। फाइट अगेंस्ट करप्शन के खिलाफ भी हम आवाज उठा सकते हैं। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो कि हर जगह पर सिंस प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैज कम, इन्होंने बहुत ही कोशिश की हुई है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर इस इशू को लाने की, रिस्क टेरर फंडिंग एंड स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, क्योंकि इंडिया खुद प्रॉब्लम फेस कर चुका है इससे, तो ये भी हमारे लिए एक अच्छा एक कॉन्सेप्ट हो सकता है यहाँ पर हाईलाइट करने के लिए। कटिंग द कॉस्ट ऑफ रेमिटेंसेस, ऑफ कोर्स वन ऑफ द मोस्ट मेजर माइग्रेंट्स जो हमें देखने को मिलते हैं। ऑफ कोर्स ये कहावत भी है कि पूरी दुनिया में आपको हर कोने में कहीं ना कहीं एक चाइनीज और एक इंडियन देखने को मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है कि ग्लोबल रेमिटेंस से रिलेटेड भी हम थोड़ा बहुत कॉस्ट कट करवा सकते हैं। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी हमारी टैप करने का यहाँ पर बहुत ही सुनहरा मौका है। हमें की ड्रग्स पर हम मार्केट एक्सेस के लिए भी बात कर सकते हैं। रिफॉर्म्स इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, ऑफ कोर्स ये तो एक्टिवली ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन फिर भी हम ब्रिक्स का भी हिस्सा है, तो वहां पर न्यू डेवलपमेंट बैंक हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से नए नए बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और ऑलरेडी जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं उन पर भी हम रिफॉर्म्स लाने की बात कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट सी चीज, रियल एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो जितने भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज चलते हैं UNFCCC के, वहां पर बड़ी बड़ी प्रोमिसेस जरूर किए जाते हैं, लेकिन रियल एक्शन वहां पर नहीं होता। तो इंडिया ने भी ऑफ कोर्स हाल ही में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 ग्लासगो में हुआ था, वहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 5 प्लेजेस दिए हुए थे, तो हम इस तरीके के इश्यूज भी वहां पर हाईलाइट कर सकते हैं कि वी डोंट नीड द टॉक, वी नीड द वॉक। चैलेंजेस क्या क्या है ओवरऑल G20 ग्रुपिंग में अगर हम बात कर सके? नो एनफोर्समेंट मैकेनिज्म, बिल्कुल यहाँ पर हम डिस्कशंस तो जरूर चलाते हैं, लेकिन उसे एनफोर्स किस तरीके से करेंगे ये मैकेनिज्म हमने अब तक नहीं बनाया G20 में। नॉट लीगली बाइंडिंग। आज के जमाने में जितने भी इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग्स, इंपॉर्टेंट इंटर गवर्नमेंटल फॉरम्स, प्लेटफॉर्म्स हम देखते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो वो फेस करते हैं इज एक्चुअली द वॉलंटरी नेचर ऑफ देयर अग्रीमेंट्स। वहां पर अग्रीमेंट्स तो साइन किए जाते हैं, बड़े बड़े बातें तो वहां पर की जाती है, लेकिन वो लीगली बाइंडिंग नहीं होती, यानी कि वो रिकमेंडेटरी नेचर पर होती है। तो ये नहीं होना चाहिए मोस्टली। ग्लोबल हेल्थ को सिक्योर करना, ऑफ कोर्स पोस्ट कोविड तो सबसे बड़ा हर्डल अगर नॉट जस्ट G20 दुनिया के आगे अगर कुछ था तो वो ग्लोबल हेल्थ को सिक्योर करना था। रीफ्यूलिंग और फ्यूलिंग इकोनॉमिक रिकवरी, एंड ऑफ कोर्स पोस्ट कोविड जो कि कंटिन्यूस लॉकडाउन वगैरह पड़ रहे थे, तो इकोनॉमिक रिकवरी जैसे कि रिसिलिएंट इकोनॉमी की हम बात करते हैं कि जितनी मांग से बढ़ेगी उतना ही ज्यादा, उतना ही जल्दी वो बाउंस बैक करेगा। तो इस तरीके की इकोनॉमिक रिकवरी के बारे में क्या सोचेगा G20? डिजिटल रेवोल्यूशन की हम बात करते हैं, ऑफ कोर्स थोड़ा वेस्टर्न कंट्रीज में अच्छी बात है कि वहां पर इंटरनेट कनेक्शन हो या फिर डिजिटल लिटरेसी ज्यादा हो, लेकिन जब हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर की ज्यादातर जब हम बात करते हैं, क्योंकि इस ग्रुपिंग में हम इंडिया, सऊदी अरेबिया, इस तरीके के कंट्रीज भी देखते हैं, तो वहां पर डिजिटल रेवोल्यूशन हम कैसे लाएंगे? क्लाइमेट चेंज रिस्क सबसे बड़ा है। अभी हाल ही में भी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के रिपोर्ट्स भी आए हुए थे, तो उसे किस तरीके से डील करेगा, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंजेस है। इसके आगे प्लास्टिक से रिलेटेड भी हम मुहिम चला रहे हैं, तो लेट अस वेट एंड वॉच। और ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर टैक्स रिफॉर्म, स्पेसिफिकली जो कि अभी हमने देखा कि टैक्स एवेशन जैसे प्रॉब्लम्स भी हम फेस कर रहे हैं, तो ग्लोबल फ्रेमवर्क की बहुत ही जरूरत है टैक्स रिफॉर्म्स के लिए, जो यूनानिमसली ये सभी G20 कंट्रीज एक्सेप्ट करेंगे और ये लीगली बाइंडिंग होनी चाहिए। तो वे अहेड क्या हो सकता है इसका? टिल नाउ अगर सच बताएं तो G20 में कंपेयर में अदर रीजनल ग्रुपिंग्स या अदर इंटर गवर्नमेंटल फोरम्स बहुत ही सही ट्रैक पर जा रहा है, कंसिस्टेंसी वो मेंटेन कर रहे हैं। क्योंकि बाकी अभी सार्क के बारे में भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ, अगर आपने नहीं देखा तो आप एक बार जाकर जरूर देखें, तो वहां पर भी हमने देखा कंसिस्टेंसी ही नहीं थी वहां पर। तो इस तरीके का काम G20 में हमें नहीं देखने को मिल रहा है। कंसिस्टेंसी वो लोग मेंटेन कर रहे हैं और इंपॉर्टेंट से डिसीजंस ले रहे हैं, और लेकिन ज्यादा से ज्यादा उन्हें फॉलो करने की कोशिश भी कर रहे हैं। दूसरा सबसे मोर इंपॉर्टेंट वे अहेड जो होगा, स्टडी ऑफ चेंजिंग डिमांड फॉर स्किल्स। ऑफ कोर्स स्किल्स हैव बीन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर डिस्कशन एंड डिबेट। इंडिया जैसा एक कंट्री जो कि सेकंड टॉप मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, लेकिन वहां पर स्किल के लेवल्स बहुत ही कम है, लगभग 40 से 45% के आसपास ही है जिनके पास एडिक्वेट स्किल है एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो G20 नेशंस किस तरीके से इस पर काम करेगा? मोस्टली दिस कैन बी द नेक्स्ट वे अहेड। और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस पर थोड़ा बहुत फोकस करेंगे तो बहुत ही अच्छा हो सकता है। इंडस्ट्री में इनोवेशन के लिए खासकर जो है पॉलिसीज वो बना सकते हैं, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट से डिस्कशंस करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। और रीडिफाइन करने की हमें जरूरत है कि एरिना क्या क्या होंगे कोऑपरेशन के। ऑफ कोर्स हमने देखा कि अंडर द अर्थ जो कुछ भी मिल रहा है वो सभी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, माना कि G20 एक फाइनेंस रिलेटेड, एक टैक्सेशन रिलेटेड, इस तरीके से इकोनॉमी से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर क्लाइमेट चेंज की भी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम ग्लोबल हेल्थ की भी वगैरह की भी बात कर रहे हैं। तो
डिफाइन करने की जरूरत है कि अरीनास क्या क्या होंगे कोऑपरेशन के और किस तरीके से होंगे। और सबसे आखिर में जो सबसे कंसोलिडेटेड एक वे अहेड जो G20 के लिए जो देखने को मिलता है, दैट इज लेस टॉक एंड मोर एक्शन। रेगुलरली वो मिल जरूर रहे हैं, एजेंडा सेट कर रहे हैं, रेगुलरली फाइनेंस मिनिस्टर्स वगैरह की भी मीटिंग हो रही है, लेकिन एक्शन कितना हुआ है उस पर, लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट्स क्यों नहीं हो रहे हैं। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी ग्रुप ऑफ 20 या फिर G20 इंटरगवर्नमेंटल ग्रुपिंग के बारे में। Today you're going to meet change makers. You're going to meet people that really want to sustain the dream that we all have, to live in a world and in a planet that succeeds and that continues to thrive, giving everybody an opportunity. Today you're going to see our youth unleashed. And I think that is the most exciting thing for me, is when I hear these young people really talking about what they want in their future. You see, we, as a generation that has already existed prior to them, we've directed. Now it's their time, it's their turn. And we're here to support and to mentor. The summit's primary objective is to develop and implement policies to enhance financial stability and promote sustainable economic growth worldwide. So the G20 summit is definitely a critical event where the global leaders, the colonial leaders, engage in crucial discussions on trade, investment, innovation, and international cooperation. The summit also offers a unique opportunity for leaders to establish and strengthen relationships with the global counterparts, fostering a more cohesive and prosperous global community. So, on that note, we are all gathered here today representing G20 International Youth Cabinet along with Educate Global, IGEN and GSFN to cohort channels and open its doors to young individuals from diverse backgrounds worldwide. So this platform invites participants to present insights and inferences contributing to UNESCO's sustainable goals. This initiative aims to address the following agenda, and contribution made by the youth will help us definitely to shape our program's preamble. Thereby, our preamble of the program goes with the 5 P's, that is people, planet, prosperity, peace and partnership, and with the agenda of plan of action for the people, planet and prosperity. And this G20 International Youth Cabinet is of the youth, by the youth and for the youth. Youth seeks to strengthen the universal peace in a larger freedom. We recognize by eradicating poverty in all its form and dimensions, including extreme poverty, is the greatest global challenge and indispensable development for sustainable development and achievement. Thereby, we seek to build on the Millennium Development Goals and compete with what was not achieved so far. And we seek to realize the human rights and achieve gender equality and the empowerment of girls and also youth. And all these are integrated with an indivisible balance between the 3 dimensions of sustainable development of economic, socio, and environmental pledges. Thereby, we will be able to, and we are determined to take the bold and transformative steps to shift the world onto a sustainable and resilient path, and we will implement this plan on our and embark on as we embark on this collective journey. So, moving ahead, when we talk about the people, planet, prosperity, peace, and partnership, that is otherwise called as 2030 Sustainable Agenda. So that's how the G20 Cabinet has evolved its vision, and with the mission with the 9 P's of people, planet, prosperity, peace, partnerships, thereby implementing policies with the protection, principles, and practices involved. So far, we had about nearly 10 weeks. We have talked about Education 360. Niranjan? Niranjan, what happened? Niranjan? Yes, Niranjan. Yes, what happened? And Shakti Spectrum for Women Empowerment, Yuva Global for Youth Empowerment, Digitalization and Innovation with Science Stream and Vocational Employability for NPR Revolution, and also Energy Resources, Sustainability and Employability for R3 Dialogues, Health and Wealth, Agriculture and Food Security for about GVC patterns,
and opportunities and the role of policies involved. Entrepreneurship and MSME with modernizing and strengthening the industrial units, whether it is MSME small scale or the middle scale units, which are to make them globally competent and sustainable, with inclusion of financial architecture and international growth, with the presidency of accelerating inclusive and resilient growth, not compromising on international taxation benefits with trade and investment, exports and imports. Thereby, we were here and we are here to reform, reshape, restructure, reconstitute the international trading architecture for a sustainable economic growth. Last but not the least, we have celebrated culture, enhancing tourism for every country, thereby to 2030 Agenda of Sustainable Development. On that note, 2030 Agenda and Development with our presidency will enable implementation of this 2030 Agenda for Sustainable Development, and that is our action agenda. Accelerating the progress towards SDG, building common ground and momentum for ambitious G20 action plan. On this note, when we talk about planet, we are going to speak about agriculture, food security, nutrition, and conservation of resources. When we talk about prosperity, we're going to talk about financial inclusion, remittances, with the inclusive business and green. When we talk about partnership, we're going to talk about domestic resource mobilization and industrialization of energy and resources. When we talk about people, we're going to talk about human resource development and employment. Last but not the least, ahead, we're going to talk about innovation and digitalization, competency and compliancy involved. So, enabling implementation of 2030 Agenda for Sustainable Development, that is our action, and accelerating progress towards sustainability, building common ground and momentum for an ambitious G20 plan. So, it involves the 5 different disciplines. First is the policy integration. It will integrate the policies of SDGs and AAAA, that is our action agenda, commitments into national development plans, policies and strategies to ensure coherence across sections and levels of government to maximize impact and avoiding conflicting priorities. Second is resource mobilization. Mobilize domestic and international resources to financial sustainable development initiatives. This includes exploring innovative financial mechanisms, leveraging public-private partnerships and strengthening tax systems to generate revenue for social and environmental programs. Third discipline is the data and monitoring, enhancing data collection and analysis of the monitoring systems to track progress on the SDGs and AAA, that is about action agenda commitments, to improve transparency and accountability to the regular reporting mechanisms involving all stakeholders from the civil society, academia, and the private sector. So, how do we achieve it? Preparing them for the capacity building institutional capacity at all levels of the government within the civil society to implement and monitor sustainable development initiatives effectively, thereby to provide training and technical assistance to ensure stakeholders having the skills and knowledge needed to contribute to this particular agenda. Thereby, partnering with organizations becomes quite indispensable, thereby to foster partnerships and collaboration among governments and non-government authorities, international organizations, civic societies, and the private sectors to encourage knowledge sharing, technology transfer, and joint initiative to address the common challenges and achieve shared goals. Thereby, what we need to adhere to is the policy coherence, to ensure policy coherence between the trade and investment and the environmental and the social policies to avoid conflicts and promote sustainable developmental outcomes, harnessing regulatory frameworks and standards to create enabling environment for responsible business practices. Thereby, last but not the least, inclusive growth is one thing that we cannot compromise. Prioritize inclusive growth and benefits from all segments of society, particularly vulnerable and marginalized groups, to promote gender equality, social inclusion, and access to education, healthcare, and basic services to reduce inequalities and poverty. Thereby, not compromising on climatic action, integrating climate action, mitigation, and adaptive measures into the developmental planning and investment decisions to support renewable energy, sustainable agriculture, and resilient infrastructure to build climate resilience and reduce greenhouse gas emissions. Thereby, we extend a warm welcome to all the global cooperation to strengthen international cooperation and multilateral institutions to address transboundary challenges and promote global solidarity, thereby honoring official development assistance commitments and support to developing countries in their efforts to achieve sustainable development. Thereby, we will evolve into a paradigm shift of policy innovation
encouraging experimentation and innovation in policy design and implementation to identify effective solutions to complex developmental challenges and foster culture of learning and adaptation to continuously improve outcomes and respond to evolving priorities. So by prioritizing all these actions and fostering a collaborative and inclusive approach, the G20 Youth Cabinet will play a crucial role in advancing the implementation of the 2030 agenda and accelerating progress towards the SDGs, while also promoting sustainable and inclusive development globally. So on that note, without taking much time, we will extend a warm welcome to all our speakers of today and also the experts who have joined us with our community partners. Niranjan? So that is the big story of G20 International Youth Cabinet. So we are here to facilitate all our speakers, all our panel experts, all our team members, the core team members, and also our team, basically, who have incepted the whole program as such. So on that note, hope you enjoyed the video. Those who have not, probably everybody would have known about G20, but we thought that let's put a little spark on this very grateful, thankful event for giving us an opportunity to work with you all. As we all know, we talk about collaboration. Moving ahead from here, our main motto is that anybody who would like to publish their presentation, we are here to support you and get it presented in the form of a paper. As such, it will be presented. And moreover, we would like to select and we would like to announce the two Sherpas whom we have not announced till now. These Sherpas are the two young leaders, the leaders from the youth community, to take it forward to the phase 2. So those two leaders are the people who will be working towards thread and thread, thick and thin, with all the youth speakers of the phase 1 and also the new collaborations with the new opportunities, with the new, educational institutions, and also about the corporates. We are moving ahead to the corporates as well. So far about, I would love to share this with you all today. Like we have joined and collaborated with about 10 different organizations at the corporate level for taking the G20 phase 2 forward, along with the youth community. So on that note, definitely presenting a paper becomes a key thing, such that we will be able to present it as a patent, as if you're giving solution to the government, and which will be represented. As you have seen, why did we even play the G20 video is that so many conferences have taken place and people have been working in different areas. That is, it's not only about a particular field, in different areas. When you talk about education, when you talk about women empowerment, when you talk about youth empowerment, when you talk about sharing the knowledge, think T20, youth cabinet is called as Y20, women cabinet is called as W20. So taking it forward to different councils, these are called as different councils where we are working. So each one of you will be made a member to represent your paper along on those presentations, and which will be taken it forward. So it's a process. So when you present it, you might, in future, you might get an opportunity to present yourself in front of all those conferences. At least you will be able to take part in those conferences which are going to come forward in different parts of the globe. So that's where we are, and we are so happy to be here. And also, briefing on that is that how Educate Global has facilitated this forum. Is that the key thing that you should know, and what we are going to work with. We'll be working with the economic growth. We'll be working with international trade. We'll be working with financial stability. We'll be working with the sustainable developmental growth. We'll be working with infrastructure investment, making it more inclusive. We'll be also working with digital economy. We'll be working with employment and education. We'll be working with global health. And also, with whom are we going to work with? We'll be working with NGOs and online organizations or knowledge sharing platforms like this in supporting the summit success, and also your contribution in this. So when we do this, what are the 5 main things which is very important is that advocacy. When we talk about advocacy, the NGOs and online organizations will create awareness. So you as youth ministers, youth cabinet ministers, you will be
actively participating and contributing to raise awareness about the key issues on those cadres, on those pointers which I've mentioned just now, and advocate specific policies and actions which are to come forward. So when we do this, who you have to be assisted or whom you have to work with, you will be working with your mentors. They are into research and analysis. So these research and analysis process will provide you the valuable research data on the global challenges and assisting the policymakers in making those informed decisions. So your contribution as a people, you'll be working with NGOs where you'll be working with your mentors in helping in the policymakers in making those informed decisions. And also thereby, which is the key thing, which is very important, is a partnership. So we need to collaborate with the NGOs and the online organizations, whether it is government level, non-government level, or business or other stakeholders from different parts of the globe, especially from those underprivileged countries. As Dr. Rubero was mentioning, Africa has not been mentioned. Definitely Africa has been a part of it. And we have started implementing projects and initiatives on those which are aligned with the summit's objectives. So thereby, whom we'll be working with grassroots engagement, and the organization will engage with the local communities of that particular country and also individuals, where amplifying these voices and addressing the needs of those particular community is going to be highlighted. So thereby, why am I explaining so much? Because we are welcoming Sherpas. From the previous phase 1, we have shortlisted only 2 Sherpas. As I told you, there was one from the male gender, one from the female gender, as we want to be equal in our gender equality. So we will be announcing it towards the end of the session, definitely, who are the 2 Sherpas. And these Sherpas are the key leaders who will be working with all these people who are going to be engaged with us in these projects at the grassroots level, in the local communities and the individuals, amplifying their voices and the needs. Thereby, what is the key thing is that the knowledge sharing. So as a responsibility, as a committed organization, Educate Global will work along with the community partners like JSFN, IGEN, and R&D University or IIU, and also all those future organizations who are going to be a part of it, in taking it forward to cohort channels and taking it forward with open doors with the younger generation from diverse background worldwide. So this platform invites students, professionals as participants to present their insights and inferences as active projects contributing towards UNESCO's sustainable goals. So this initiative will aim to address the following agenda, which were mentioned about very clearly. And so we have talked about more and more, such that this becomes the preamble for our execution. That is people, planet, prosperity, peace, and partnership. So thereby, we'll be working with policies, principles, and also about taking it forward with the 9 P's of the people, planet, prosperity, partnerships, protection, and also the implementation practices which are involved in it. Thereby, we should be able to achieve success. And for all this, we extend our big thank you in gratitude for taking it forward. And such that we would like to hear from one of our community partner, IGEN. So over to Dr. Ramesh, if he's around. Dr. Ramesh, President of IGEN, we would like to present before Dr. Ramesh. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, sir. Thank you. Dr. Kabir has joined in now, sir. Yes. So if you would allow me, I would welcome him, and then we'll take it forward. Thank you. Thank you so much. Thank you, Dr. Kabir. Yes, thank you so much. Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. Yes, we are doing fine, Doctor. So, Dr. Kabir. Yes. Yes, Dr. Kabir. Thank you so much. So thanks for joining us as a chief guest for today. And Dr. Kabir is the CEO of, yes, Dr. Ramesh? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ANPM, and is a member of the board of directors of NABD Al Emirat, and a member of board of directors of Friends of Parkinson's UAE. So we welcome you here, Dr. Kabir, with due respect to you. Thank you so much. Yes.
Madam, can I proceed? Dr. Kabir will proceed and then we can proceed. Dr. Yes, yes, Thank yes. you. Yes, Doctor. Yes, it is my pleasure to be the part of this great initiative taken by Dr. Srividya, and I'm very happy and glad to meet all the great people here, mashallah, and any kind of support to grow, expand your business in United Arab Emirates and in the Gulf region. We can do that, and when we are in person, we will discuss great more things. I want the show to be continuous, so I will end up my speech here. Thank you. Thank you, Dr. Kabir. Thank you so much. Thanks for taking out your time. Thank you so much. We really appreciate it despite odds. It's a real privilege having you here. And I know you're busy with some other personal things. So thank you so much, Dr. Kabir. Over to Dr. Ramesh, the president of IJET. Please, sir. Thank you. Thank you, ma'am. And so very happy, Dr. Kabir, Chief Operating Officer, Royal Family Office. I am Dr. Ramesh, President of the Institution of Green Engineers. Thank you so much for your presence with us. It really proud moment for us because you be part of us and witnessing the G20 Youth Cabinet, how we had traveled last 3-4 months, connected with the youth icons and deliberation on various content, various pointers, and coming out with the recommendation which we are planning to present to G20. So really it was a wonderful session. With all your support, we will take it forward, and in future we can able to convert this as some kind of project so that it will be like we will go ahead with the implementation mode. Thank you, and very happy to be part of us. And IJET, the Institution of Green Engineers, we are working for United Nations Sustainable Development Green Goals. We had identified 9 green goals. So through that, we had initiated various collaborative program. So we had a program, IJET NSA Club. Presently, we have 35 energy saving clubs in India. So through that, we are creating clubs in the engineering colleges. So through that engineering colleges clubs, we will motivate the students and go ahead with the concept of saving 1 unit per day at home. So how we can able to save 1 unit per day at home? This is a concept. We call it as energy saving 9 mantras. So this 9 mantra will be promoted by this energy saving club to the general public. So this is and we converted that as the project. We call it as the Energy 99 Challenge project. What it means? This mantra will be promoted to 99 public in the villages. So the 99 residents will aware of energy saving concept and they will start implementation. So let us example one of our contributor, Mr. Fayaz is here. He is a student of MGR University, and he completed this project by promoting awareness, creating awareness on energy conservation. You all know the hot summer in India now, and presently yesterday the energy, that is Tamil Nadu, 350 megawatt. That is our energy demand. 30% it is increased within a month. So it is very difficult. So the concept here is we have to reduce the consumption. That is the concept. That reducing the consumption, we are planning to change the attitude of the people. That project got recognized by UN. The project ID is 48555. That is second project. We are having the cycle for green. So people has to drive the cycle every week, Saturday, Sunday in the morning, 5 kilometer, 10 kilometer. When they are traveling, they have to do some energy, that they have to do some green activities. Let us example, one of our student is traveling in the cycle and collecting the plastic bottle and giving to the recycling. Like this kind of projects. The third project, STG project, talk for STG. The students has to create awareness on STG. This is one project. Like that, we have some around 7 or 8 projects. And we had a conference where Edu Global all partner with us. We are hosting May 18th is our conference. We call it as Energathon. It is the 24 hours online conference connecting people across the globe. 13 partners are connected together. So we are talking again the 6 themes. One is COP29. We are taken one theme under the COP29, COP 2030. India
Sustainable Development Report, UN Energy Impact Action Report 2025. This all that Earth Day. This all we are discussing in that May 18th program. So like this, there is a lot of programs, lot of activities for the develop skill, particularly for the developing the skills of the students. So this is what about the activities of IGEN. And we had a Young Green Innovators Army. Through that, we are motivating the school students to go for converting the innovation to patent. Converting this is because innovation to patent. Presently, we filed through IGEN 4 patent which is filed through the school students. So 4 team got filed a patent. Presently, 10 team, Kavita ma'am and team is working for that. And coming to so this all team which is involved here, headed with Tanuja ma'am and Sai Prasanna. So with our Fayaz, is the head for the G20, and Niranjan, Bharat, all together around we had a very 20 to 25 speakers, I think, from IGEN participated in G20, that is a youth cabinet. And it was a very happy moment. What happened? So this impact reflected in their regular academic activities. Let us example one example we can tell Amit University or MGR or Crescent. The students feel that they participated in G20 like that. They felt that they participated in G20. So their happiness, and they got appreciated by the management. They got appreciated by their own colleagues. So this certification for the students will help for them to go get it to the placement and all the activities. Finally, there is a good network is there because of G20. We all are connected. Not only we, there is the whole team across the globe. Young youth communities are connected. Very much thank you, Dr. Srividyam. So because of your initiative, I know that how trouble you had by hosting the program on every Saturday, Sunday. So even a lot of people ask me how it is possible that every Saturday, Sunday continuously program, and 3-4 weeks a Saturday, Sunday program. One day G20, another day COP20 30. I hope 3 to 4 weeks continuously it is like that. So sure, your dedication of work will affect a good outcome. Surely we all together we can able to change our Mother Earth green. Thank you all. Thank you so much. Thank you all the partners. Thank you all the speakers who contributed. Thank you so much. Thank you, Dr. Ramesh. Thank you for those insightful words. So I would request Niranjan to play the Felicitations ceremony video. Thank you so much. Volume, dear. Volume is not there. Okay, yeah, fine.
Thank you. Thank you so much. Thanks for all of the support. And big congratulations to each one of you. A big round of applause to each speaker, each participant, and the youngest participant. Dr. Kabir, we would like to bring to your notice. Our youngest participant was about age 10, 10 years of age, 11 years of age. Students who were studying in grade 5, grade 6, they had all participated here on this global forum. So we are so happy to felicitate them. Moving ahead, we'll be going ahead with the phase 2 part of it, where we'll be having Sherpas with the title of G20 Youth Cabinet Convoy members. So under your patronage, under your influence, under your guidance, we'll be able to take it forward, Dr. Kabir. Thanks for your precious time. With due respects, on behalf of everyone, all our community partners, I take this privilege of thanking you for your precious time. And it's a greatest honor to have you on our show today. Thank you, Dr. Kabir. Thank you so much. My pleasure, inshallah. Support will be always be there, inshallah. Sure. As requested, I will forward the details to every participant such that when they want to collaborate with us, they will come back to us. Thank you so much. Thank you. So now we open the forum to all the participants to register their inferences. So we'll start with Professor Khalid Hamid. Yes, hello, just a moment. I will change the extension because I want to open the camera. Sure. Thank you. Yes, Professor, please. Yes, that's wonderful. Thank you so much. First of all, thank you, Dr. Kabir, and thank you for Dr. Servida. Every time they give me good opportunity, it's not enough actually to say thank you. But let me share something very important. Actually, I'm Khalid. I'm from Egypt. I'm actually a normal person. I start as a educator, teacher in international and American school. That's since more than 25 years ago. I contacted directly with youth, and that when it's time I was, I decided to be good support for our students in my school. And also I contact with the parents and administration to grow with this new generation until I got experience how I be able to support for students' life. And now I am here to speak about the knowledge. There is no end for knowledge. As I see that is a wonderful the video what I saw, but I'm sure who back of this working, I'm sure it's youth. That's what I mean. If youth have the power to do something, you will be see wonderful world, good environment, good climate change, good life, safe countries. Everything it can be happened if you focus for youth. If you want to be grow with the green countries and good life for all over the world, you have to focus for three things: youth, girls, women. Why girls and women? Women because women they are mothers. They are support for their children to grow with them in their life. And girls also in future they will become mothers. Then we have to support for girls and women. And what about youth? Youth, you can see boys and girls and boys, they have a power to deliver many things, but they have to know exactly what is the knowledge, how they can support, how they can grow with their life. Thank you, Professor. Thank you for registering. Congratulations once again. Dr. Delchin Ribeiro from Brazil. Please, sir. Thank you. Thank you very much. First of all, I would like to say my gratitude to join this great event, G20, International Youth Cabinet. And my thanks to Dr. Sukumar and to all organizers, and representing the University of Itaúna, which I work as a scholar. I would like to say that I'm ready for the next events, and I will be joining with a great pleasure. So thank you once again.
and it was my pleasure. Thank you so much. Thank you. Congratulations, Doctor. Dr. Vishnupada Bose. Yes. Dr. Vishnupada Bose? Yes. Yes, Doctor. Two minutes, please. Thank you, sir. Yes. Thank you. Very good evening. Good afternoon. Good evening. Where are you now? Dr. Shivid Shukumar, our chief guest, Dr. Kabir, Dr. Delton Ribeiro, Dr. Khalid, Dr. Tanuja Madam, IGN President, respected IGN President, IGN members, all esteemed scholars. I express my sincere thanks and gratitude to all of you. I am fortunate that I am a part of this forum, that G20 International Youth Cabinet. I have learned many things from this summit last couple of weeks. And I have seen that the effort and dedication from the Dr. Shividya Sukumar is really very appreciable, and I grateful to her that she has taken initiative to introduce this type of summits and forums where youth members are getting, they are in the part of this G20 2030 goals. I strongly believe that the forum or the G20 International Youth Cabinet is going right direction, and we will be the part of the G20 2030 goals. And sure, we will assist to achieve the goals of G20 2030. And I'm grateful to all of you, grateful to Shibida Madam, grateful to Dr. Kabir, grateful to all distinguished guests and speakers. Thank you so much. Thank you, Doctor. Thank you, Dr. Vishnupada Bose. Thank you so much. Moving ahead, like from IGN members, Dr. Tanuja. Tanuja Madam? Yes, I'd like to start with you. Yes, ma'am, please. Very good evening to all. I'm very proud to be a part of G20 summit. And actually, this is a real great forum for connecting the youth in a right track. So thank you for this great opportunity to be a panel expert and to connect it with the youth and to express my view and also to share all the to know about the insights of the current the significant things needed to be presented. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, Dr. Tanuja. Ms. Kakai? Ms. Kakai Dafine? Yes, I will not put on my video. Hope it's all right with you. Yes, sure, it's fine. Please go ahead. I would like to thank you so much for all the contribution and all the love you showed to us, and being part of this has enabled me learn more and associate with different people. So congratulations to all of you. Congratulations to you, Ms. Kakai. Thank you so much. Mr. Derek? Mr. Derek, would like to hear from you. Mr. Derek? Hello? Yes, you're audible and we're able to hear you. Please go ahead. Thank you. I just want to express my sincere gratitude for you guys giving me the opportunity to participate in this G20 Youth Cabinet, and I wish that could have a lot more projects like this coming up. Congratulations, Mr. Derek. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you so much. Ms. Roshni? Ms. Roshni? Yes. And you can keep it a little short, Ms. Roshni, this time. Sorry. Yeah, so actually, I have to thank everyone for giving me this opportunity, and especially to you for showcasing us in front of this place. Especially, this is a more unique, and we feel so honored to be here. So, and also, we are waiting for season 2. Thank you. Thank you. Thank you so much. Ms. Sashmita? Yes, so, I'm deeply honored to share this. So, and I would like to express my sincere gratitude to everyone. Thank you for the opportunity. Thank you, dear. Thank you so much, Mr. Bharat. Can we hear from you, Mr. Bharat, please? Anybody else, like Mr. Mohammed Fayaz Alam?
Please go ahead, sir. Thank you. Congratulations. Good evening, good afternoon, good morning, everyone. Assalamu alaikum. This is MD Fayazalam from India, MGR University. I'm very happy to share my words. Actually, I got this chance from my president, IGN president, Dr. L. Messer and Dr. V. Tanuja ma'am. When we entered this forum, I saw what is going on inside the world. What actually youth is going on and which pattern we are going on. So I think in mind of set I'm very happy to be a part of this type of program. And now it's a pleasure to thanks everyone, Dr. Siri Vidya ma'am and Dr. Chief Guest Dr. Kabir sir and our delighted persons. Actually, I don't know that much name. So all of you, thanks, and my team members who work on G20 from IGN and out of IGN, all of you, thank you, ma'am, to give me a chance. Thank you, Mr. Fayaz. Mr. Ramana Krishnan. Mr. Ramana Krishnan. Until he comes back, Mr. Gokul Murugan. Yes, Mr. Raman. No. Yes, please. Yes. We have lost Mr. Ramana, I think. Yeah. Mr. Shiva. Anybody else would like to take it forward? Mr. Bharat or Mr. Ashraf? Yes, Mr. Ashraf, you're muted. You're muted, Mr. Ashraf. Sorry. Thank you. Sorry for that. Good evening to all. My name is Mohammed Ashraf, and I'm very glad to be a part of this G20 meetings. While meetings, I know many things about G20 and about the countries who participate in G20, and that's it. Thank you. Thank you. Mr. Bharat? Yeah, yes, ma'am. Yes. Congratulations, Mr. Bharat. Yeah. Hello. Yes. Am I audible? Yes, you are. You are. Please go ahead. Yeah, thank you a lot. I have experienced so many things through this event. I think we will be looking forward for more partnership with the help of Mr. Niranjan and Dr. Srividya ma'am. It is very happy that this event is very successful and with so much of confidence and self-driven, we have achieved a lot, but it's not enough. We will try to achieve more and more. Mainly thanks to our sir, Aizen Ramesh sir. It is very happy to be a part of this. Thank you. Thank you. Thank you so much. Have I missed out anyone? Mr. Ram? Mr. Ram or Ms. Roshni Mohan? Roshni Mohan, we finished, I think. Yeah, we have done. So we have come to the end of all the speakers' inputs. Thank you, Dr. Kabir. It's our privilege to have you. And thanks for your precious time. And very soon we'll be coming back again with phase 2, where we'll be working with more and more people across the globe and taking it forward. And such that, as I requested, like anybody who want to publish the paper, you can always get back to us through Niranjan and Dr. Ramesh as well, and we'll be helping you out. So on that note, congratulations to each one of you once again, and thanks for being here. And one more program that we are coming up with, the Education 360, which I would like to throw a little light upon. How is education sector connected with all the other fields and how we are going to contribute. So that will be again 21-week session, which will be starting up in the month of May as such. So thank you, Dr. Kabir. This is we are so happy to share that information with you. That's our next project, which is Education 360. How we are going to talk about how education sector is connected with all the other 7 SDG goals and other sectors, we have to work in more inclusive form and in a more collaborating manner.
So thank you so much. Thank you once again. Thanks for all your precious time. And thank you once again, Dr. Kabir. Thanks for being here with us. Thank you. It's our honor and a privilege of having you here on this show today. Thank you on this felicitation ceremony. And so our biggest congratulations to each one of you. Until we meet again, it's adieu and a big congratulations once again. Thank you, Tanuja ma'am. Yes. Thank you so much, ma'am. Sorry, actually, I'm not able to connect from the beginning. Unexpected case. Thank you so much for the opportunity. Thank you. Thank you so much. And anybody else who has joined in, please tell them that the certificates will be forwarded because I could see so many people joining in late. Mr. Sai Sharavanan. Sai Shravan. Sai Shravan. Yeah. Mr. Sai Shravan. We missed you for the session. We missed you for the celebration. Would you like to say something? Congratulations to you, Mr. Sai Shravan. Anybody else? Sai Shravan, you can share your views, Sai Shravan. I think he's still trying his audio. So all your certificates will be forwarded to Tanuja Madam. Tanuja Madam will be sharing all your certificates. Moving ahead, phase 2 will start with phase 2 in the month of August, again with COP 2030. And before that, we will have one more session, one more project, which is called as Education 360. Hope to see you all for the next COP 2030, Education 360, and G20 Youth Cabinet phase 2. Thank you. Until we meet again, it's adieu and congratulations once again to each one of you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Ma'am, Yes. ma'am, can we take a group photo? All of you open the camera. Can take. Sure, we'll do that. So we request all the participants to have the video on, so that we will go on to the gallery mode, and we'll take a group picture. Thank you so Yes, much. Yes, ma'am. Yes, ma'am. That's what I'm telling. Say cheese. Congratulations once again. Kindly, everyone, open the camera. Let's see that bright, beautiful smile on your face. Celebrate this moment, please. Everyone, please. Roshni is joining in. We are going Ramana in and Sai Shravan, switch on your video. Yes, Ms. Roshni, Everyone, Mr. Ramana, And Dr. even you can Ramesh. change your backdrop also. It's okay, Roshni, backdrop, Ramana, everything for Gokul corporate. Murugan, Sai Shravan. Happy to see you all here. Dr. Ramesh. Dr. Ramesh Niranjan. Gokul Murugan, Rosni. Mr. Gokul Murugan, we are going in for a group photo. So maybe please request you to open your camera. Other people are good. Okay. Let's go ahead. Sai Shravan, you want to change your backdrop? The backdrop is there in the chat box. Sai Shravan, go to video mode and then change it. Ms. Kakai, we are going in for a video, a group photo. So would you like to open your camera, Ms. Kakai? Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. It's okay. It's okay, Sai. Please. Rashmita has joined. She's joined back. Rashmita, we are going in for a video. I mean, the gallery picture.
So if you can open your camera, please open your camera if it's okay with you. Oh, Saishan, your mic is not working. Huh? Okay. So no problem. You can change if possible your backdrop. I have shared the backdrop to your WhatsApp number. Okay, we'll go in for the picture now. We'll go in for the first picture and then we can take another. Yes. Who is taking the picture? Okay, fine. Sure, thank you. The message is not available, I think so. Done? Ma'am. Thank you. Everyone. Thank you. Thank you, everyone. So congratulations once again. Hip, hip, hooray. So until we meet again, it's bye from all of us. So definitely, I think you'll be missing us for the next Sunday and Saturday. Thank you so much. Thank you all. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. For your full support. Thank you. Take care about Thank you, everyone. Thank you. Thank you, Dr. Kabir. Thank you so much. Assalamu alaikum, Dr. Kabir sir. फिर मिलेंगे. Thank you, Niranjan. Thank you. Thank you. Take care. Thank you. Thank you. भाग्य बड़ी चौथी गेस्ट